Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's lecture would be about common terminology which is related to livestock management. Basically, uh, as we have already discussed, that this course of animal husbandry would be comprising of four components. So this is the first component, that is livestock management. Okay. Uh, I think we should start with the uh, basically the course titles terminology. Animal husbandry. Animal husbandry basically is a branch of agriculture which is concerned with animals, with animals I mean cattle, buffalo, sheep, goat, etc. that are raised for meat, fiber, milk, eggs, or other products. So animal husbandry basically deals with those animals which produce something for us, which are a source of meat, which are a source of fiber, milk, eggs, draft power, uh, and some other products. That's basically animal husbandry. So you may have heard a terminology, bread and butter. So half of the breakfast is covered by animal side. So the butter is being provided by animal husbandry, or specifically the livestock management. So animal husbandry includes four basic components: livestock management, animal breeding and genetics, animal feed and nutrition, and the last one is poultry science or poultry production. So animal husbandry has four components. So basically, we can say for animal husbandry that it is aimed at enhancing per animal production. तो बुनियादी तौर पे जो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जिस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि जो एक एनिमल है उसकी पैदावारी सलाहियत बढ़ जाए, फी कस पैदावार जो है जानवर की वो बढ़ जाए. अब आते हैं लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, सेकेंड टर्मिनोलॉजी. सो livestock management, if we start from the definition of livestock management and then combining them, livestock is a general term which is applied to domestic animals. And which domestic animals? We include cattle, buffalo, sheep, goat, camel, horse, donkeys, and mules. They all are included in domestic animal category and are termed as livestock. If someone is talking about livestock, you must understand immediately that he means or she means that cattle, buffalo, sheep, goat, camel, horse, mules, donkeys. So, management. Management, the term reflects its meaning that to care or arranging something, or the judicious use of available resources. Judicious use of available resources means that we use the input in a way, in an optimum level, at an optimum level, that our output gives us maximum profit. सो दिस इज बेसिकली जुडिशियस यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. और अगर मैं ये कहूँ कि जानवर को थोड़ी खुराक खिला के या इस तरीके से खुराक मैनेज करनी, इतनी सस्ती खुराक करनी है कि वो खा के उससे ज़्यादा पैदावार दे और हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सके. So coming towards the combined definition of livestock management, that is the care of farm animals according to modern husbandry practices to get maximum benefit out of them. So the different aspects of management are housing, feeding, watering, bedding, milking, and breeding, etc. of animals.
यानी लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट का जो एक ओवरऑल जो इसकी डेफिनेशन है या तारीफ है, वो इसको हम इस इस्तेलाह को यूं भी बयान कर सकते हैं कि जितनी भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज हैं, टेक्निक्स हैं जो कि एनिमल हस्बेंड्री में इस्तेमाल हो सकती हैं, ये किसी फार्म पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल करने के लिए, इसको लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट कहते हैं। और जो लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट है, इसमें मैनेजमेंट के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो इंतज़ामी अमूर हैं, मिसाल के तौर पे जानवरों के रहने की जगह का इंतज़ाम है, उसकी खुराक का इंतज़ाम है, उसके पीने का इंतज़ाम है, फिर उसकी जो सोने की जगह है या जो बेडिंग है उसका इंतज़ाम है, फिर उसका जो दूध धोना है, उसके लिए मिल्किंग पार्लर और दिस एंड दैट, ये किस्म के अरेंजमेंट्स, और फिर ब्रीडिंग है। तो ये सारी की सारी चीज़ें लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट के उसमें अम्ब्रेला में आती हैं। नेक्स्ट टर्म इज अबाउट काफ। व्हाट इज काफ? वो जो हम कहते हैं ना, कटड़ा या बछड़ा, उर्दू में कहते हैं कटड़ा या बछड़ा, काफ या कटड़ी या बछड़ी। तो बेसिकली काफ इज यंग एनिमल belonging to cattle, buffalo or camel species up to 6 to 9 months or maximum 12 months. This is in case of camel. Male calf is known as bull calf and female calf is known as cow calf. So कटड़ा, बछड़ा और कटड़ी, बछड़ी, बेसिकली ये बफलो, कैटल और कैमल स्पीशी के लिए यूज होते हैं। और 6 से 9 महीने तक की उम्र के जो मेल काफ या फीमेल काफ हैं, यानी बुल काफ और काउ काफ जो हैं, उनको हम इस कैटेगरी में शामिल करते हैं। Then a very important terminology, heifer. Heifer basically is an adult female buffalo or cattle before first calving. यानी जो एनिमल अभी जिसने बच्चा नहीं दिया, यानी पहले सुए से पहले तक जो जानवर है उसको हीफर कहते हैं। इसको आप जोटी कहते हैं या जो भी कहते हैं, तो वो इसमें हीफर में आता है। Then comes the cows. Basically, this is a sequence starting from the younger age to the adult age. So heifer to cows are mature females that can reproduce. Mature females that can reproduce, it means their reproductive tract is active, and after the calving or parturition, these cows would produce milk. So calf to heifer, or I would say a cow calf to heifer, heifer to cows. That is the mature stage when an animal reproduces. Then comes bull. Bulls. If you hear about this terminology, bulls are basically male animals which are used for breedings. And one thing which is very, important about bulls, we must keep in mind, is that if they are breeding, they must be uncastrated. Otherwise, at farms, it's a normal practice or in a routine practice to castrate the bulls. So bulls basically are males used for breeding and are uncastrated. Then comes steers. Steers are young castrated males between the age of 6 to 24 months. I mean, तकरीबन आधे साल से लेके 2 साल तक की उम्र के दौरान जो है उनको स्टीयर्स कहते हैं। एंड क्योंकि इनको कैस्ट्रेट किया होता है, इनको खसी किया होता है, तो इसको हम ब्रीडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। देन कम्स बुलक्स। बुलक्स बेसिकली also they are castrated 2 year or older castrated bulls that cannot reproduce. यानी 2 साल और उससे ज्यादा वाले जो castrated bulls हैं, इनको और जो reproduce नहीं कर सकते, इनको हम bullocks कहते हैं। So the basic difference between bulls and bullocks is of number one is that the bull is used for breeding, but bullocks cannot be used for further breeding or reproduction. Stag is a male animal belonging to cattle, buffalo, camel, which is castrated late in life. I mean, if we castrate a male animal after 1 year of age or 2 years of age, it becomes stag.
That means bullocks and stag basically, we can say, I mean, steers, bullocks are equivalent. Stag can be categorized into steer category or bullocks, but the main difference is the timing of castration that makes them or differentiates them from steers and bullocks. Next terminology is gelding. Gelding is basically a castrated horse or other equine species such as donkey or a mule. जेल्डिंग कहते हैं जो भी खसी किया हुआ घोड़ा या दूसरी घोड़े से मुतलका जो जैसे कि गधा है या खच्चर है जिसको कि हमने कैस्ट्रेट किया होता है उसको जेल्डिंग कहते हैं. कोल्ट जो है मेल हॉर्स को कहते हैं अंडर 1 year of age. Then comes filly is a young female horse under 1 year of age. So the difference between colt and filly is that the colt is a young male horse below 1 year of age, and filly is a young female horse below 1 year of age. One thing, another terminology is hinny. The young one born as a result of cross between male horse and female ass or female ass. Hini and basically next is we should I would say to how to bookmark this terminology, and in the coming terminologies I would make it clear that what is the difference between this terminology, Hini and other. The young one born as a result of cross between male horse. I mean, the male is horse and female is ass. Next term is mule. The animal born as a result of cross between male ass and female horse. If we compare the two terminologies, Hini and mule, the difference is very clear that the young one born as a result of cross between male horse. In Hini, the male is horse, and in case of mule, the male is ass. And female is horse in case of mule, and but in case of Hini, female is ass. So both these possibilities exist in this cross breeding, Hini and mule, in crossing these two species. I mean, on one side, male can be a horse and female can be an ass. I mean, female donkey. Uh, and in case of mule, the male can be a donkey and female can be a horse. So these two possibilities, as a result of these two possibilities, the young ones born are have different names in English or technical names, Hinni and mule. Uh, Another important terminology, which is most commonly used in livestock management or animal husbandry, is flock and herd. Flock basically is a group of sheep or goats or other small animals, for example, poultry. But in case of herd, this is a group of cattle and buffalo, or I would make it clear that a group of large ruminants like cattle and sheep. Another term I have already used is castrated. Castrated is basically uh, we make an animal unable by using different means, unable for breeding purpose. That is known as castration. Or the animal sperm cord is basically stopped or broken or damaged or stopped in a way that it cannot reproduce. So that phenomena is known as the action is called castration. Then is a horse. What is the definition of horse? We commonly use horse. Oh, so basically the 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 animals which belong to family Equidae except those of donkeys and mules. I mean इसमें गधे और खच्चर शामिल नहीं है, लेकिन जो घोड़ा है या उसकी जो फुल फैमिली है वो डिफरेंट है.
Stallion, an adult male which is uncastrated, mature horse, usually more than 4 years old, which can be used for breeding. It is also known as entire. So stallion is basically the older horse male which is used for breeding, also known as entire. Then is a mare, an adult mature female horse over 4 years old, which can be used for breeding. So mare and stallion. Stallion basically is 4 years or over 4 year old horse male, which is uncastrated and can be used for breeding. And in case of mare, because we only perform castration in male or male animals. So mare is basically adult mature female horse over 4 years old, which can be used for breeding. Then comes foal, a young horse of either sex up to 1 year of age. यानी 1 साल की उम्र तक जो घोड़े के जो बच्चे हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उनको फोल कहते हैं. फिर इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी है डॉकिंग की. डॉकिंग बेसिकली इज अ प्रोसेस ऑफ कटिंग और रिमूवल ऑफ टेल ऑफ एन एनिमल. Process of cutting or removal of tail of an animal. Antibody, everybody knows, maybe very much clear about it, that a protein substance which is developed or synthesized by lymphoid tissues of the body in response to an antigenic stimulus. I mean, anything entering into the body through any part of the body into the system, whenever it enters into the body start to retaliate, start to attack, counter attack, or to control these things. So in response to controlling these antigenic stimuli, body has a special immune response, ultimately leading to the production of specific proteins, and these protein substances are known as antibodies. एंटीबॉडी का आप सबको पता है, बड़ा क्लियर है, आई एम श्योर. देन लैम्प मार्किंग, castration, flushing, docking, all are known as lamb marking. So different practices which we perform in case of lamb, like castration, flushing, docking, tail docking, these are known as lamb marking. Another terminology very important, maturity and puberty. Basically, maturity is the age in which animal attains mature body weight. Animal attains mature body weight. And puberty is the age in which starting of estrous cycle takes place. यानी मेच्योरिटी में सिर्फ जानवर मेच्योर होने का मतलब ये कि उसका वजन उसने वो हासिल कर लिया है जो कि उसकी मेच्योर बॉडी के लिए ज़रूरी है, यानी कि वो रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है. लेकिन उसको उसकी जो पबर्टी है, यानी कि उसकी जो एज है जब उसने बाकायदा तौर पे ब्रीडिंग स्टार्ट करनी है, यानी ईस्ट्रस साइकिल, हीट जो में आना जो है एनिमल का, वो जब शुरू हो जाता है तो फिर हम कहते हैं कि यस, द एनिमल हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ पबर्टी. तो पबर्टी में और मेच्योरिटी में डिफरेंस है. एनिमल अगर मेच्योर है लेकिन पबर्टी तक नहीं पहुंचा, या एनिमल पबर्टी की एज तक तो पहुंच गया है लेकिन उसका वेट जो है वो उसने अटेन नहीं किया, दैट इज अनदर स्टोरी. पार्चुरेशन, द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ बाय एनिमल इज नोन एज पार्चुरेशन. ये हम बड़े जानवरों में ये जो सुआ जो होता है, सूना जो है जानवर में, उस अमल को पार्चुरेशन कहते हैं. एक है जो ये जो पार्चुरेशन है ये लार्ज एनिमल्स में यूज करते हैं, और जो काविंग है, ये जो काविंग का अमल है ये किडिंग, यानी कि पार्चुरेशन भी कहते हैं बड़े जानवरों में और काविंग भी कहते हैं. और शीप गोट में इसको किडिंग, लैमिंग, और हॉर्स वगैरह में फोलिंग, फ्रेशनिंग भी कहते हैं. फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है लैक्टेशन पीरियड. लैक्टेशन पीरियड मींस कि जब तक जानवर दूध देता रहेगा, काविंग टू ड्राइंग ऑफ, यानी
बच्चा देने से लेके दूध खुश्क करने तक, अगले बच्चे के पैदा होने से पहले तक, जब तक वो जानवर खुश्क नहीं हो जाता, उसको लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। फिर है जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड बेसिकली कंसेप्शन टू पार्चुरेशन का जो पीरियड है उसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। यानी जानवर जैसी प्रेग्नेंट हुआ उस वक्त से लेके उसके जो काविंग का जो फिनोमेना है, यानी जो पार्चुरेशन का अमल है, उस वक्त तक का जो पीरियड है उसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। मिसाल के तौर पे जो जेस्टेशन पीरियड की मैं मिसाल देता हूँ कि काऊ में ये 9 मंथ्स है, यानी 9 महीने बाद ये एक जो गाय है वो बच्चा देती है, जबकि भैंस जो है वो 10 महीने के बाद बच्चा देती है। सो द जेस्टेशन पीरियड ऑफ कैटल एंड बफलो इज डिफरेंट। एक और टर्मिनोलॉजी है सर्विस पीरियड। सर्विस पीरियड बेसिकली मींस काविंग टू कंसेप्शन पीरियड। सर्विस पीरियड इज काविंग टू कंसेप्शन, यानी बच्चा देने के बाद जब जानवर दोबारा इस काबिल हो जाता है कि उसका टीका रखा जाए या उसकी यानी कि मलाई कराई जाए, तो इस पीरियड को सर्विस पीरियड कहते हैं। Another term is dry period. ड्राइंग ऑफ टू काविंग, यानी जानवर का बच्चा पैदा करने का जब टाइम आता है तो उससे 2 या 3 महीने पहले जानवर को खुश्क किया जाता है, यानी उससे दूध लेना बंद कर दिया जाता है। इस अमल को ड्राई पीरियड कहते हैं या ड्राइंग ऑफ कहते हैं। इसकी ज़रूरत क्या है, कैसे किया जाता है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आज टर्मिनोलॉजी जो है वो चलेंगी। फिर उसके बाद है काविंग इंटरवल, यानी काविंग इंटरवल बच्चा देने की जो 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 इंटरवल है, ड्यूरेशन बिटवीन टू काविंग इज नोन एज काविंग इंटरवल। फिर हम एक टर्मिनोलॉजी है काफ़ी सारी, ये बहुत यूज़ करेंगे, सायर एंड डैम। सायर बेसिकली जानवर का जो पेरेंट्स में जो बाप होता है यानी मेल जो होता है उसको हम सायर कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक कटड़ा या बछड़ा है तो उसका जो मेल फादर यानी उसका जो होगा उसको हम सायर कहेंगे, और जो उसकी जो मदर है जो उसको हम कहेंगे डैम। फीमेल ऑफ एनिमल्स पेरेंट्स इज नोन एज डैम। So cow has a dam and a sire. Another terminology is basically a management practice. We would be learning about this term or this practice in the coming topics. That is disbudding or dehorning. Very simple words. I would say dehorning is basically removal of horns from young ones. At the age of 7 days or 15 days or within 1 month, we normally remove the horns from young animals. This process is known as disbudding or dehorning. Uh, Next term is ram. Ram and buck. These two terminologies have same meaning but are used for different species. Ram is an adult mature male sheep used for breeding, and buck is basically an adult mature male goat which is used for breeding. So ram is for sheep, mature male sheep which is being used for breeding, and buck is a mature male goat being used for breeding. Another terminology is ewe. Ewe. Ewe is basically an adult mature female sheep that is used for breeding. And ewe lamb and ram lamb. Ewe lamb is basically young female sheep and ram is basically young male sheep. And lamb alone is basically newborn sheep or young sheep, also meant from a young sheep. You is already explained to all of you. Wether. The wether basically is castrated male sheep or goat is known as wether. यानी जो खसी बकरा या बेडू होगा उसको वेदर कहेंगे. Then another terminology is doe. Doe is mature female goat, and billies is mature male goat. If we talk about doe kid and buck kid, doe kid is basically young female goat and buck kid is young male goat.
Kid alone means newborn goat. This is another terminology, wean. Wean is a condition when young one is no longer fed milk. The last slide of, I would say, about cull. Cull basically is the removing of an animal from herd or flock because of its below herd or flock standards. For example, you have a herd of, for example, a very fictitious example, that you have 20 cattle herd, and out of these 20 animals, one animal is producing, we can say that only 10 liters of milk per day. On the other hand, other 19 animals are producing more than 25 liters of milk per day. So we would remove this from this herd. This process is known as cull. Another terminology is abortion. The expulsion of fetus before completion of pregnancy and before it is able to survive is known as abortion. Another very important terminology is ad libitum, related to feeding of animals. That means the animal is free to eat at will. Anytime it has free access to feed. Then carcass. Carcass is the dressed body of the meat animal when offal have been removed after slaughter. यानी जब आपने देखा होगा कि जानवर को जब ज़िबा किया जाता है तो उसके जिस्म से जितने भी फजूल या जो दूसरे मवाद हैं, फुजला वगैरह है, वो सारी चीज़ें रिमूव करने के बाद जब बाकी गोश्त बचता है उसको हम कारकस कहते हैं, ड्रेस्ड बॉडी ऑफ द मीट एनिमल. Colostrum, the mammary gland secretion of mammalian females for the first few days after parturition. यानी पहले 2 से 3 दिन या 4 दिन जो दूध आता है उसको हम colostrum कहते हैं, जिसको बोली भी बोलते हैं. Anthelmintics. Anthelmintic बेसिकली जो इंटेस्टिनल वर्म्स हैं उनको किल करने के लिए जो ड्रग यूज होती है उसको हम एंथलमेंटिक्स बोलते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं? एंथलमेंटिक्स बोलते हैं. So another terminology that is artificial insemination is basically deposition of semen into the cervix of the female artificially. It allows males to produce more offsprings. So artificial insemin मसनूई नस्ल कशी है जिसमें हम सीमन जो है वो ट्यूब्स में लेके हम उसको बाकायदा डायरेक्टली उसको ना थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन के थ्रू सर्विक्स के अंदर उसको इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे एक मेल्स के कई बच्चे पैदा हो सकते हैं एक ही टाइम में. एक और टर्मिनोलॉजी है मोनोगैस्ट्रिक्स की. तो उसमें सिंपल एक उसकी मैं ये कहूँगा कि जो मोनोगैस्ट्रिक्स हैं दे हैव ओनली single chamber of their stomach, or organisms or animals having single chambered stomach. Then is alimentary canal. Alimentary canal basically is passage or tube along which food passes through the body from mouth to anus during digestion. And starting from mouth till the anus, the whole tube or the passage of passage of food through the body is known as alimentary canal. So students, that was all for today. I think you have enjoyed it very well. Thank you very much. We will have a question and answer session after this. Okay.